Hello and a very good afternoon to all of you. I am Shweta Sharma, a first year BTech computer science student studying at the North Cap University, Gurugram. I'll be your host for today's webinar on the topic stress management. Talking about stress, first of all. What is stress? It's such a general and common term we all come across in our day to day life. It's very often, and we know its meaning. Stress simply means pressure or strain, and that can be physical, emotional, or mental. This is all we already know about stress. Uh, but unfortunately, we also know that stress has a capability to destroy an individual to from so many different aspects possible. So therefore, it's important and the need of the hour that we learn new ways, new techniques, new methods to cope up with stress, to deal with stress, and that simply is ways for stress management. Ladies and gentlemen, it's an absolute honor for me to present to you Dr. Shweta Sharma, and she is a licensed clinical psychologist with Rehabilitation Council of India and has an experience of about 10 years in the field of mental health. She has completed her MA in clinical psychology from Bhopal University and MPhil in the same from PGI BA MS Raipur. She's an expert in cognitive behavior therapy, neuropsychological problems and assessments, obsessive compulsive disorder therapies, marital therapies, and the list, my friend, it literally goes on and on. She has also been featured in many national magazines, radio channels, and newspapers. She has more than 10 research papers presented and published at various international and national journals and conferences. She has also received the Best Paper Award in 2018 for childhood sexual abuse. And she is currently associated with Columbia Asia Hospital, Palam Bihar, and also as a part time clinical psychologist at Jawaharlal Nehru University, that is JNU, New Delhi. She last served as the Commissioner of Police, Gurugram, to set up their psychological wing, and she's also on the panel of Juvenile Justice Board, Gurugram. For the benefit of the community, she commenced an initiative called Mansa for mental health awareness, where she is helped by a number of volunteers to conduct monthly group sessions on topics like mental illness, child abuse prevention, autism spectrum disorder awareness, mental health among LGBTQIA plus community, etc. in Delhi NCR. You really are an inspiration to all of us, Dr. Shweta. And on that note, I would like to thank all our attendees for joining us today and thank you for your time. We have received an overwhelming response from your end. And I guess this is all from my end. Next, you'll be hearing from the woman herself, a woman who is an inspiration to all of us and who has achieved everything her heart has ever desired with consistent hard work and talent. So, Dr. Shweta, let's begin with you now before the question round. A very good evening to all of you. Thank you so much, Anshika, for a brief intro. And Thank you. definitely, it's hard work. But yeah, words are more than the thanki. So thank you so much once again, Anshika. And I welcome you Thank all the you. attendees. We are here for all your queries, all your whatever you are facing right now during the lockdown, or your general queries related to stress. You can start with that. So, Anshika, how Uh, would you like to start? So, we can start with the questions which we received in the Yeah, group, or just a yeah, general thing? we can. It's all up to you. I mean, if you want to tell us something more about yourself or your Hmm. journey, definitely we would love to Mm-hmm. hear that, or we can directly start with the Okay. questions. Okay, so guys, I think first we should know each other in a formal way because you know the introduction, but in very general way, I'm Dr. Shweta here. So I'm a clinical psychologist, as Anshika said. So there is a difference between psychologist and clinical psychologist. First, I would like to highlight that who is psychologist, who is clinical psychologist, who's counselor, and where we need to go. This is one question we which is always in our mind whenever we are facing any mental health issue or any stress issue. So counselor is the one who can help you with, general counseling, general issues only.
Psychologist is one who is basically into research and academic things, or who is having, masters in the psychology in any field of psychology. MPhil in clinical psychology, or PsyD in clinical psychology, or postgraduate, there is professional diploma also in clinical psychology. These are three degrees which enables one person as to call as a professional and registered clinical psychologist in India. Where we need to Yeah. go during the mental health issue, so you need to go to clinical psychologist who can deal with you all your clinical problems like depression, anxiety. These are some, clinical issues, OCDs and other thing. Because we think कि this is just happening, depression ही तो है, anxiety तो ही है, सभी को होता है, हम घर में बात कर लेंगे. But no, it's not like that. It's clinical condition, and you need proper clinical psychotherapy by a trained clinical psychologist. For counselor you can go, अगर आपको कॉलेज में घर पे छोटे मोटे इश्यूज हैं, फ्रेंड्स में हो रहे हैं, रिलेशनशिप में इश्यूज हो रहे हैं, then you can go to a counselor, your counselor only. They can help you with the, life, क्या life skills हो सकती हैं, क्या problem solving techniques हो सकती हैं. These are something which is a part of the counselor. So there is some, you know professional boundaries between counselors and clinical psychologists. For the clinical issue, as we are doing is stress management. So stress management in many part, because I still remember there was a question in the group. What are, there are some personalities who's having anxiety issues. Definitely, without lockdown, also they are showing some symptoms like that. And there are some personality who are facing anxiety issue in just this period, in this lockdown period. So what are the personality behind any disorder? Why we are feeling like this? Why we two people think differently in single or same situation? This is something which comes with the clinical psychology. That's why I'm here as a clinical psychologist to deal with all your clinical issue. So how I started, like it's more about like uh, almost 10 years now. So I started, definitely my I belong to Bhopal, a small town, definitely capital of MP, but very different from the Delhi NCR. So I started my journey from there. I did my masters there, but I have this insight कि yes, I need to become a clinical psychologist only, because I love to deal with people कि सोशली कैसे करना है, लोग अगर ये कर रहे हैं तो इसके पीछे सोचते क्या है, क्या पर्सनालिटी क्या है. सो दैट माई इंटरेस्ट इन टू पर्सनालिटी lead me to this path कि I need to be a clinical psychologist. Then I was very clear what are the life skills which I need to develop as a clinical psychologist. So I started working as a clinical psychologist. Then 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 I started working as a clinical psychologist. All right. I guess we There lost was some some technical connections from issue. your side, Yeah, yeah. Dr. Shweta. Yeah, I'm so sorry about this. Yeah, it's okay. It's all Are right. we connected? Yeah. Okay. Yeah, So yeah, then you're I audible. started with the masters. After having my professional degree, I started working with Dr. RML Hospital. It was a government hospital, as you all know. But when I was working in the government setting, I feel that there is some foundation on you. You are limited as a professional. आप हर चीज नहीं कर सकते. You need to order, you need to follow your orders, your seniors कि ये करना है, ऐसे नहीं करना है. But when we are dealing in the psychology, आपका कैनवास खाली होना चाहिए. तब आप काम कर सकते हो एज अ थेरेपिस्ट. व्हाट यू वांट टू डू, व्हाट यू वांट टू अंडरस्टैंड एज एन इंडिविजुअल, उसकी इंडिविजुअल कैपेसिटी क्या True. है, इंडिविजुअल कहाँ पे हमें काम करने की जरूरत है, वीकनेस क्या है. एवरीवन इज राइट, एवरीवन इज रॉन्ग. चाहे बीइंग अ थेरेपिस्ट, बीइंग अ नॉर्मल बीइंग, बीइंग अ स्टूडेंट, बीइंग अ पेरेंट्स, बीइंग अ चाइल्ड. बट हर किसी के Yeah. कुछ पार्ट अच्छे होते हैं, कुछ वीक होते हैं. सो एज अ थेरेपिस्ट वी नीड जो अच्छा काम है, जो अच्छा पार्ट है, उसको और स्ट्रॉन्ग बनाना है, और जो वीकनेस है उनको ओवरकम करना सिखाना है. और वो जब तक आपको वो फ्रीडम नहीं मिलेगी एज अ थेरेपिस्ट, तब तक आप वो नहीं कर सकते. सो दैट वाज द रीजन व्हेन आई लेफ्ट माय ऑल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड आई स्टार्टेड वर्किंग एज अ कंसल्टेंट. So as we started with Mansa also, Mansa is again for the community mental health reach. One part is as a clinical psychologist, which I'm dealing sitting at the hospital. People are coming to me as a patient, but
दिस Yeah. इज अ बिग क्वेश्चन इन द इंडियन सोसाइटी. क्या आप आना चाहते हो एज अ पेशेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास? नो, Yeah, that's नेवर, actually बिकॉज a great question. या They all एवरी prefer टाइम a इफ good hospital or a good doctor, and they, usually think that it's just a psychologist and not recommended or renowned or and something like that. if you are visiting a clinical psychologist, even a psychologist, so people usually what say, are you psycho? Why it is required for you? So Yeah, there, yeah, this is definitely. the biggest stigma. So Yeah, for that's a stigma. breaking that stigma, ki people should respect mental health also, and your mental health is more important than your physical health. अगर वो mental health ठीक Definitely. है, तो आपकी physical health अपने आप ठीक होगी. That's why we started Mansa for community mental health reach. So we started in the 2018. In my leadership, I have some psychology, my interns, my students, some professionals. So there is a group and we patent it Yeah, idea, then we keep into the group. और उसके बाद में चाहे वो नुक्कड़ नाटक हो, चाहे वो वॉक हो, अवेयरनेस वॉक हो, ये सब चीजें करते हुए हम कम्युनिटी को जितना ज्यादा अवेयर कर सकते हैं, वी आर वर्किंग ऑन दैट पाथ. सो लेट्स सी कैसे हम सब ही उस वाले वे में आके आए कि एक सेंचुरी तो ऐसी आनी चाहिए व्हेन पीपल यू prefer to go to a mental health specialist. There should not and any that too stigma freely, behind it. without any question and Freely. stigma. True, Hmm. right? Without any question, without any judgment in anyone's mind कि this is something which is required. आपको छुप के आने की Yeah, जरूरत नहीं है. We have so many clients who always suggest us कि please किसी को आप बताना मत, please notes मत डालना आप. क्यों? क्योंकि वो yeah, रिवील नहीं करना चाहते. तो और आधे से ज्यादा इश्यूज स्पेशली विद द सुसाइडल केसेस, वो बात ही नहीं कर पाते. अगर वो बात कर definitely. लेते वो स्टिग्मा नहीं होता और शायद हम बहुत आगे बढ़ जाते. So this is the need for the community mental health reach, and this is the need for this session by one department which is into technical thing only, but they are focusing on the Yeah. mental health. So I congratulate personally to hold the team to organizing this event. Thank you. Thank you Thank you so much so for much. organizing And we this event. appreciate you for taking out your time and coming to us. So that is all. Thank you, Dr. Shweta. And on that note, I would like to, as again I told, I would like to thank all our attendees. And meanwhile, if you have any kind of questions, you can definitely use your mic and tell them to us, or you can definitely mention them in the chat box. We'll try to reach to them as much as possible. Okay, so with that, let's begin with our first question. It's a very basic one, and it strikes everybody when we hear about stress. Every time we talk about stress, the first question that strikes our mind is, "What is stress, and what are its causes?" And because Anshita, I'm so sorry. I'm so sorry. yeah, Pardon, can you repeat the question because yeah, there yeah, is network definitely, sure, fluctuation. Mhm, yeah, yeah, sure. mhm, My question is a very basic one, and I'm mhm, asking such a basic question because I feel that whenever we talk about mhm, stress as a topic, this is the first thing mhm, that strikes our mind. That what is mhm, stress and what are its causes? And are there some root causes that we can conclude that already these are some of the root causes that actually are the main reason behind stress? So, what is mhm. your take on that? What is stress and its So, causes? yeah, stress is basically as you already defined in your, write up when you were posting about the session. And I was very impressed कि you guys posted very correctly. So stress Thank is you. definitely a outforce जो आपको environment से एक pressure है, जो आपके mind पे आ रहा है, जो कुछ भी करने के लिए आपको pressurize कर रहा है, चाहे वो good work हो, चाहे वो bad work हो. If you are not Definitely. able to handle it, and that pressure should be here. ठीक है, परफॉर्मेंस के लिए भी वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बट देयर आर सम पर्सनालिटी वो स्ट्रेस कब बनता है, दैट फोर्स इज ऑलवेज हियर, राइट. बट एज पर योर पर्सनालिटी देयर आर सम पर्सन जिनको थोड़ी सी एंजाइटी ज्यादा रहती है, उसी पर्सनालिटीज होती हैं, वो Mhm. बहुत जल्दी इस बारे में स्ट्रेस लेने लगते हैं अगर बाई चांस इफ देयर इज एनी मीटिंग शेड्यूल. So they Yeah, started panicking कि कुछ होने वाला है, कैसे होगा कैसे नहीं होगा. This is stress because they are not able to cope up with that pressure. That pressure is always there. So that pressure we called stress. Then what are the symptoms? किनको ज्यादा होगा, किनको ज्यादा नहीं होगा. वो stress जब आ रहा है, तब आपके physical, mental, psychological symptoms जो निकल के आते हैं, उन्हें हम बोलते हैं stressful situation. Because stress is again a mental element जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है.
how you can identify, how you can judge what is the level of stress and one person is stressed or not, वो आपको कैसे पता चलेगा? उसके फिजिकल सिम्टम्स को देख के पता चलेगा या उसके मेंटल कैरेक्टर्स को देख के पता चलेगा? सो मेंटल कैरेक्टर्स में आता है जैसे आपके अटेंशन कंसंट्रेशन में यू मे फील सम डिफिकल्टी, राइट? और आपको नींद में प्रॉब्लम हो रही है, आपकी एपिटाइट कम या ज्यादा हो गई है, दिस आर सम थिंग्स जो बहुत विजिबली दिखने लग जाती हैं, आपके फेशियल एक्सप्रेशन दिखने लग जाते हैं, दिस आर सम थिंग्स की पता चल रहा है स्ट्रेस है। स्ट्रेस इज द बेसिक थिंग। जब स्ट्रेस बहुत टाइम तक कंटिन्यू होता है, उसको प्रॉपरली ट्रीट नहीं किया जाता, तब वो एंजाइटी में डेवलप हो जाता है। तो स्ट्रेस कुड बी इनटू योर डे टू डे लाइफ आल्सो, एनीथिंग लाइक अभी के लिए अगर अभी की सिचुएशन की मैं बात करूं, सो कोविड को लेके अगेन वी आर रीचिंग इट्स 11 टुडे, वी नो कि 17 इज द डेट फॉर द दिस 3.0 लॉकडाउन। अब स्ट्रेस सब लोगों को स्टार्ट हो गया है, एक्सटेंड होगा या फिर से मतलब रिलीज होगा या नहीं होगा। सो दिस इज समथिंग डे टू डे स्ट्रेस, थोड़े टाइम तक रहेगा, थोड़े टाइम के बाद में चला जाएगा, सिचुएशनल है, राइट? उसके बाद कंटिन्यू नहीं होगा। अगर उसके बाद भी वो कंटिन्यू होता है, वो स्ट्रेस आपको इतना ज्यादा आपके ऊपर हावी हो जाता है कि आप जो सिम्टम्स मैं आपको नॉर्मली बता रही हूँ कि नींद में प्रॉब्लम हो रही है, भूख में प्रॉब्लम हो रही है, जो भी बहुत से लोगों को हो रही है, वो कंटिन्यू होती चली जाती है, तो वो क्लिनिकल एंजाइटी में डेवलप हो जाता है। अब स्ट्रेस कौन सा ऐसे लोग हैं, मतलब टारगेट पॉपुलेशन क्या हो सकती है जिनको स्ट्रेस ज्यादा अफेक्ट करता है? तो जिनकी पर्सनालिटीज थोड़ी सी, जिसको मैं बहुत लेमन लैंग्वेज में अगर बताऊं, स्ट्रेस के लिए प्रोन कौन ज्यादा ज्यादा हो सकता है? देयर आर डिफरेंट पर्सनालिटीज जो जैसे जिनमें थोड़ी सी पैरानोया टेंडेंसी होती है कि हर चीज में एक डाउट आना, हर चीज को लेके टेंशन होता रहना, राइट? एक थोड़ा सा जिन लोगों में परफेक्शनिज्म बहुत ज्यादा होता है, उसी पर्सनालिटीज होती हैं कि हर चीज बेटर वे में होनी चाहिए, एक सिस्टमेटिक वे में होना चाहिए, वो लोग हमेशा फॉलो करते हैं कि लाइक यू नो एक पूरा एक शेड्यूल होना चाहिए, पूरा एक रूटीन होना चाहिए, दे ऑलवेज प्लान एंड देन दे डू थिंग्स। और अगर उनकी प्लानिंग में कहीं पे भी उनको प्रॉब्लम फील होती है, वहां पे उनको स्ट्रेस होना शुरू हो जाता है। सो सच काइंड ऑफ पर्सनालिटीज आर मोर प्रोन टू हैव स्ट्रेस इन एनी सिचुएशन देन एंड नाउ, कि अभी भी हो सकता है, बाद में भी हो सकता है, बट देर आर सम पर्सन जिनकी लाइफ स्किल्स बहुत स्ट्रांग है, सेल्फ कंट्रोल बहुत स्ट्रांग है, बैलेंस पर्सनालिटीज है, उनके अंदर स्ट्रेस को डील करने के लिए ऑटोमेटिकली कोपिंग स्ट्रेटेजीज बहुत स्ट्रांग होती है। सो कोपिंग स्ट्रेटेजीज आर समथिंग जो आपको स्ट्रेसफुल सिचुएशन को डील करने का पावर देती है। सो कोपिंग स्ट्रेटेजीज कुड बी लाइक एज पर योर पर्सनालिटी, कुड बी एज पर योर बैकग्राउंड, could be as per your resources which is available in your environment, in your social situation, psychosocial Definitely. situation. These are something which is very important. So this is the stress, एक normal चीज है, एक pressure है जो बाहर से आपके mind पे आ रहा है, ठीक है? अगर आप चाहें तो उसको positively भी ले सकते हैं, negatively भी ले सकते हैं, and on Yeah, this because basis we uh, actually yeah, yeah. Because there are a lot of people, they consider stress as a negative term. So how do we actually know that, it's positive that's as what well I'm as saying. negative? So Yeah. how can we So draw a distinguishing line between both of them, a positive and a so negative stress? yeah, as I said, every coin has two sides, okay? Every position has Definitely. different two different stories, एक तरफ कुछ आएगा, एक तरफ Perspectives कुछ आएगा, and, yeah, सेम वे faces. में कि Definitely. स्ट्रेस के भी टू टाइप्स है, वन इज यू स्ट्रेस, वन इज डी स्ट्रेस। यू स्ट्रेस इज समथिंग जो आपकी परफॉर्मेंस को बहुत अच्छा कर रहा है, वो स्ट्रेस रिक्वायर्ड है। अगर मेरा कल एग्जाम Mm. है और मैं बिल्कुल भी Yeah. स्ट्रेस नहीं हूँ, मैं आराम से नेटफ्लिक्स जो एंजॉय कर रही हूँ, मैं प्रिपेयर नहीं Yeah. कर रही हूँ, मैं स्ट्रेस फ्री हूँ, ठीक है, Mm. क्लिनिकली मैं स्ट्रेस Definitely. फ्री हूँ, बट Mm. क्या ये मुझे हेल्प करेगा एग्जाम के लिए? No, एटलीस्ट थोड़ा सा तो I प्रेशर guess चाहिए not. ना, थोड़ा सा स्ट्रेस चाहिए, Definitely. थोड़ा सा स्ट्रेस चाहिए। Mm. सो दैट Definitely. इज यू स्ट्रेस की जो आपकी परफॉर्मेंस को अच्छा कर रहा है, किसी अच्छी चीज के लिए है। लाइक इफ एज यंग जनरेशन इज हियर, आपकी कोई डेट फिक्स होती है, राइट? तो आपको डेट पे जाना है नेक्स्ट डे पे, वो एक Yeah. दिन पहले स्ट्रेस होता है ना, girls are visiting saloons, boys are discussing Yeah, something. So this that definitely. stress is again Mm. coming into you stress, which is good Mm. in the nature, that is you Definitely. stress, good quality Okay. of the stress। de-stress बिना Okay. किसी रीजन के, अब जैसे मीटिंग की बात हुई, राइट? यू आर वर्किंग इन अ Mm. कॉर्पोरेट,
or you are working, you as a student, आप you have a presentation और आपके regular presentation चल रहे हैं, I'm not talking about your sessionals and other things, your अगर आपके Okay. regular presentation से आपको meetings भी attend करनी है, या फिर as a Mm. clinician मुझे रोज patient attend करने हैं, अगर मेरी ही बात की जाए, Mm. और मैं रोज Definitely. patient attend करने के पहले, before starting my OPD, I'm getting stress. That is de-stress, which is definitely going to spoil my performance, which is Definitely. coming due to my personality trait. I'm not able to Mm-hmm. handle any stressful situation, because ये बहुत जनरल सी बात है, ये तो रोज ही होना है, उसमें कुछ भी नया नहीं है, कोई सडन चीज नहीं हुई। अब जैसे जब कोविड 19 आया था, तो सडन जब आया था तब हम सब स्ट्रेस में थे, Mm-hmm. उस टाइम पे हम उसको Mm-hmm. डी स्ट्रेस नहीं बोल सकते, दैट वाज अब रिक्वायर्ड स्ट्रेस पोजीशन, अगर वो नहीं होती तो शायद हम लोग प्रिकॉशंस नहीं लेते, और अभी भी हम जितना बेटर कर पा रहे उतना नहीं कर पाते। Yeah, ठीक है, तो definitely. in That's that true. way stress always has two different perspectives, sometimes it is required, sometimes it is not required। तो कभी भी अगर कोई ये बोलता है कि स्ट्रेस फ्री जोन या जीरो स्ट्रेस, Mm-hmm. that could not be true। stress is always required in good amount or in a good perspective। so ऐसे मत फील करिए कि थोड़ा बहुत भी अगर किसी में स्ट्रेस आ रहा है तो आप उसको बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दो, दैट इज Yeah, योर that's right. yeah। I also believe that a little amount of stress is definitely beneficial for motivation as well as success. Hmm. Okay, so with that, let's move on to our Hmm. next question. Having learned Hmm. about some of the root causes of stress and what is stress, uh, my question now is that how an individual can cope up with stress at his own Hmm. level best. That is, Hmm. because usually whenever we face an issue, we face a problem, whenever something different happens with us, we try to resolve Hmm. that issue at the comfort of our home. So, what is Hmm. that very first thing that an individual can do at his own level? Like, we hear doing exercises can help, and reducing the intake of alcohol or drugs can help. So, what are Hmm. such kind of things that an individual can Okay. do himself before consulting a doctor or a specialist for that? Yeah. So first thing is that before consulting a doctor or any specialist, drug use and any other clinical application is something which I never advise to use at your own. This is something जहाँ पे आपको expert का suggestion चाहिए। What you can do best as an individual. Analysis is the word. Analysis for your behavior, analysis for your situation, analysis for your resources। तो सबसे पहले आप ये देखिए एज एन इंडिविजुअल व्हाट इज, मतलब सबसे पहले सिचुएशन पे या तो आ जाइए, इंडिविजुअलिटी को बाद में रख सकते हैं कि सिचुएशन अभी क्या है, सिचुएशन क्या है, उसमें एक आप प्रॉपर हैराकी बना सकते हैं। हैराकी में ये आ सकता है विच इज द वन फैक्टर विच इज अफेक्टिंग मी मोस्ट, सबसे ऊपर क्या आएगा, उसके बाद में क्या आएगा, फिर उससे थोड़ा सा डिग्री किसकी कम है, फिर उससे थोड़ा सा डिग्री किसकी कम है। सो यू गॉट 10 पॉइंट्स और सपोजिटली 5 पॉइंट्स आपके पास में एक सिचुएशन एनालिसिस होके आ गई कि आपका मेन फैक्टर क्या है, राइट। उसके बाद में इंडिविजुअल एनालिसिस पे आइए। इंडिविजुअल एनालिसिस में आप फोकस करेंगे व्हाट इज योर बेस्ट क्वालिटी एज एन इंडिविजुअल। ये सिचुएशन मेरे सामने है, मेरी कौन सी बेस्ट क्वालिटी ऐसी है जिससे मैं इसको डील कर सकता हूँ। ठीक है, दैट बेस्ट क्वालिटी शुड बी अगेन इन द हेराकी पोर्शन, जिसको आप वन बाय वन अप्लाई कर सकते हो टू डील विद द सिचुएशन। देन कम ऑन द रिसोर्सेज एनालिसिस कि ठीक है मैं अकेले ये हैंडल कर सकता हूँ, अब मुझे कौन से ऐसे रिसोर्सेज हैं जो मुझे रिक्वायर्ड हो सकते हैं। सपोजिटली आपकी फैमिली, कई बार ऐसा होता है व्हेन यू आर स्ट्रेस यू नीड योर फैमिली सपोर्ट, आप उनसे बात नहीं करना चाहते हो स्ट्रेस के बारे में, बट यू जस्ट Definitely. नीड अ हग, A right, you family just need a time. hug, Yeah. acknowledgement, or that that sense of safety, that sense of emotional safety, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है एज अ ह्यूमन बीइंग। तो उसके बाद में आप रिसोर्सेज को चेक कीजिए कि आपके पास रिसोर्सेज क्या क्या है। इन तीनों को मिला के एज एन इंडिविजुअल यू कैन डील इन बेटर वे विद द स्ट्रेस। और उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि नहीं ये नहीं हो पा रहा है, तब आप कंसल्टेंट के पास में या जो भी सब्जेक्ट एक्सपर्ट है उनके पास में जाके कांटेक्ट कर सकते हैं। बट डेफिनेटली आई विल नॉट सजेस्ट टू गो टू ऑन यूट्यूब और गो टू योर मोटिवेशनल स्पीकर्स और Okay. गो टू कंटिन्यूस रीडिंग अबाउट इट। वो कभी भी हेल्प नहीं करता है, बिकॉज हर चीज के लिए रेफरेंस है, चाहे वो बुक्स हैं चाहे वो यूट्यूब वीडियोज हैं, they are using some reference, definitely they are not Definitely. telling you and you Yeah, are yeah. not aware about it. So what you are getting from the speaker only, you are not going to ask them what is the reference about it, and that is going to impact in different way। एक ही मोटिवेशनल स्पीकर है जो किसी को पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेगा, जो किसी को नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा।
सो फर्स्ट डू योर वर्क एज एन इंडिविजुअल। आप एज एन इंडिविजुअल क्या कर सकते हो, आपकी सिचुएशन कितनी हार्श है, कितनी इजी है, आप कितना डील कर सकते हो, जरूरी नहीं है। अगर 100% सिचुएशन की बात की जाए, मे बी 50% यू कैन डील एट योर ओन, एंड फॉर 50% पार्ट यू नीड टू गो टू अ कंसल्टेंट, राइट? सो कोई बात नहीं, 50% कर लेते हैं। एज एन इंडिविजुअल व्हाट यू वुड लाइक टू नो कि मैं कितना कैपेबल हूँ, कैपेबल इन द सेंस मैं एक्सपर्ट Definitely. नहीं हूँ, बट तब Yeah. भी मेरे अंदर कौन सी कैपेसिटी है, क्या मैं स्ट्रेस को फेस कर सकता हूँ। देयर आर ऑलवेज टू सिचुएशन, फाइट और फ्लाइट। फॉर द स्ट्रेस स्पेशली, फाइट का मतलब क्या हो गया, सिचुएशन मेरे सामने आई, मुझे अभी इसको सॉर्ट Face आउट it. करना है, Yeah. करना जरूरी है, तो फाइट करिए उससे, ठीक है। अगर आपने अभी फाइट नहीं करा तो आप उसको रख देंगे पीछे, वो सप्रेस करते जाएंगे, धीरे धीरे वो आपके Definitely. सबकॉन्शियस से अनकॉन्शियस माइंड में ट्रेवल करेगा, जो बाद में जाके आपको हिट करेगा, राइट? वन Yeah. व्हेन वी आर टॉकिंग, व्हेन वी आर इनटू प्रेजेंट, दैट इज आवर कॉन्शियस माइंड, जहाँ पे कॉन्शियसली सब कुछ हो रहा है। जरूरी नहीं है कि हर चीज रजिस्टर होगी, धीरे धीरे रजिस्टर Definitely. होके वो पीछे जाती जाएगी। जो भी चीजें हम सप्रेस करते हैं वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड को लीड करती है, राइट? अब कई सिचुएशन ऐसी है कि मैं फाइट अभी नहीं कर सकता, जैसे अभी कोविड के लिए, Mm. क्या हम फाइट कर Yeah. सकते हैं? बाहर चले जाए घर से, No. नहीं हो सकता। तो No. उस केस में Definitely हमने not. क्या किया, हमने खुद को सप्रेस किया घर के अंदर। तो Yeah. कभी कभी ऐसा होता है कि आपको फाइट इमीडिएटली नहीं करना है, आपको थोड़े टाइम के लिए अवॉइड करना है, उसको रिजर्व करना है। करना जरूर है, बस उस टाइम पे छोड़ के थोड़े टाइम के बाद भी करना है। सेकंड इज द फ्लाइट। तो ये फ्लाइट यहाँ पे थोड़ा सा यूज हो रहा है, थोड़ा सा फाइट यूज है। फ्लाइट इज, आपने कई लोगों की टेंडेंसी देखी होगी, वेन एवर दे आर स्टक इन अ सिचुएशन, दे यूजुअली प्रेफर टू फ्लाई फ्रॉम द सिचुएशन। वो कभी क्वेश्चन नहीं करेंगे, Yeah. कभी आंसर Definitely. नहीं करेंगे, Yeah. कभी फेस नहीं करेंगे, वो फ्लाई कर जाते हैं वहां से। Mm. दैट इज वी कॉल फ्लाइट। अब वो फ्लाइट ऑफ द सिचुएशन में क्या, धीरे धीरे उनकी टेंडेंसी बन जाती है। तो जब आप इंडिविजुअल एनालिसिस कर रहे हैं, आपको ये चेक करना है यू कैन फाइट विद द सिचुएशन और नॉट, और इफ यू नीड टू फ्लाइट, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, हाउ आई कैन डील इन द फ्यूचर, कैसे ये मुझे इम्पैक्ट नहीं करेगा। तो जब सिचुएशन आपके सामने ऑर्गेनाइज वे में होगी, when you know what is your situation, what is your capacity to deal with it, and what is your resources, then you are, like, complete package to deal with the stress situation. बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आपके माइंड में ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता ना थॉट्स का, तब तक आपको Mhm. प्रॉब्लम होती रहती है। वो ऑर्गेनाइजेशन एक बार हो Okay. गया एनालिसिस के बाद में, देन यू आर ओके टू गो। Okay. Okay, with that, I have a very relatable question, and हम्म it's relatable because we usually, all of us have faced or हम्म we will face this situation once in a lifetime. We हम्म often find ourselves in a situation where we fail to create a distance between our professional life and our personal life. So, हम्म how do you ensure that stressful situations of your personal life do not affect your work performance? So, हम्म how do you ensure that? So, in that way, definitely, boundaries is something we need to understand. What we have in the personal life, there should be a boundary for this. Okay, on what we have in the professional life, so there should be a defined boundaries for that also. अगर वो बाउंड्रीज नहीं है, तब वो ओवरलैपिंग शुरू हो जाती है और आपकी पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ में आने लगती है, प्रोफेशनल लाइफ पर्सनल में आने लगती है। सो देयर आर सर्टेन रूल्स टू मेंटेन सच कंडीशन। जैसे अभी के लिए बात हो रही है प्रोफेशनल लाइफ, व्हेन वी टॉक अबाउट द प्रोफेशनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ का टाइम क्या है, 9 to 5 और 10 to 5? Usually 9 to 9, I guess. 9 to 5, नाइन टू yes. नाइन 9 to 5 will नाइन टू be फाइव दिल्ली comfortable. एनसीआर में क्या है? दिल्ली 9 एनसीआर to जो 5? नॉर्मल नॉर्मल एनसीआर विदाउट कॉर्पोरेट, जब हम ट्रैफिक से भी डील कर रहे होते थे। Well, that's definitely we have हाँ, to start तो from our home, कोई keeping in mind the बाउंड्रीज नहीं traffic है। and all, हाँ, and no लाइक boundaries. बाय 7 अर्ली इन द मॉर्निंग वी आर स्टार्टिंग, Yeah, वी आर रीचिंग definitely. बैक अराउंड 10 PM। सो वहां पे Yeah, कोई बाउंड्रीज ही नहीं थी, आपकी कोई फैमिली लाइफ नहीं है, कोई पर्सनल लाइफ नहीं है, वहां पे वो फ्रस्ट्रेशन है, राइट? अब डेफिनेटली वो चीज हम कंट्रोल नहीं कर सकते, बट हम कंट्रोल क्या कर सकते हैं, द ट्रेवल टाइम, वो ट्रेवल टाइम की तरह ही रखा जाए। व्हाट वी पीपल यूजुअली प्रेफर व्हेन वी आर ट्रेवलिंग आल्सो, वी आर वर्किंग फॉर आवर ऑफिस वर्क, can't we use that time for the family thing or for the personal life? पर्सनल लाइफ में इश्यूज तब आ रहे हैं जब आप टाइम नहीं दे पा रहे हो, या वो स्पेस नहीं मिल रहा है आपके इमोशंस को वेंट आउट होने के लिए।
वो दोनों चीजें आपकी क्रॉस हो रही है, आपका ऑफिस में मूड खराब है, ऑब्वियसली आप उसको कंटिन्यू कर रहे हो, और आप घर पे भी आके फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हो। यू आर नॉट, और इन अभी वाला जो इरा है ना, सभी के अंदर एक चीज है कि विच व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, प्रोफेशनल लाइफ इज मोर इम्पोर्टेंट, अगर वो ठीक होगी तो पर्सनल लाइफ अपने आप ठीक हो जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता। देर आर सम पीपल ऑल्सो जिनको लगता है रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर वो ठीक नहीं होगा तो मैं प्रोफेशनली नहीं कर पाऊंगा। दोनों चीजें अपनी अपनी जगह पे इंपॉर्टेंट है। सो फर्स्ट यू नीड टू फिक्स देयर प्लेस, कि वो कहाँ पे होनी चाहिए और कैसे होनी चाहिए, कहाँ पे है, किस बाउंड्रीज के साथ होनी चाहिए, दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस दीजिए और उनको वहीं पे स्टक रखिए। प्रोफेशनल जहां तक है वहीं तक रखिए, पर्सनल जहां तक है वहीं तक रखिए। अब ये आप ऐसे तो कर सकते हैं प्रैक्टिकली, बट माइंड का, इमोशंस का क्या करें? तो इमोशंस के लिए यू नीड टू बी मेच्योर, जैसे हम बोलते हैं ना, ही इज वेरी मेच्योर और शी इज वेरी मेच्योर, ही कैन हैंडल एनीथिंग। वो मेच्योरिटी कोई लेसन नहीं है कि ऐसे नहीं आता, वो एक्सपीरियंस से आता है, सेल्फ कंट्रोल से आता है। वो सेल्फ कंट्रोल कैसा है? आपको उस समय पे व्हेन यू आर एंटरिंग इनटू पर्सनल लाइफ और इनटू प्रोफेशनल लाइफ, आपको इसी प्रायोरिटी के साथ में सेल्फ कंट्रोल यूज करना पड़ेगा, प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, कि इस टाइम पे मेरी प्रायोरिटी अब प्रोफेशनल लाइफ है। आई कांट क्राई, ठीक है, आई कांट थिंक और रीथिंक अबाउट माई पर्सनल इश्यूज, बिकॉज अगर मैं वो करती रहूंगी, कंटिन्यू करती रहूंगी, तो धीरे धीरे मैं अपना प्रोफेशनल अप्रोच खत्म कर दूंगी। सेम वे में अगर मैं प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ में हूँ, पर्सनल लाइफ में भी अगर मैं ये कंटिन्यू कर रही हूँ, तो धीरे धीरे मैं अपना रिलेशनशिप लूज कर रही हूँ। तो वो बाउंड्रीज आपको हमेशा डिफाइन करके रखनी है, एंड यू नीड टू गिव इम्पोर्टेंस इक्वली टू बोथ थिंग्स। वो कहीं ना आपका वो जो मेंटल सेट बन चुका है, यू नीड टू चेंज दैट। और वो धीरे धीरे प्रैक्टिस में आएगा। अगर लोगों को लगता है सिर्फ बोलने से नहीं होता है, वो हम सबको पता है, बट करें कैसे? तो अगर आपको लगता है नहीं होता है, यू हैव मोबाइल, टेक्नोलॉजी अभी सबके पास में है ना। टाइम मैंने इसलिए आपसे सबसे पहले पूछा, आप टाइम सेट कर दीजिए। ये टाइम था मेरा, वहां पे लिख दो उस टाइम के टाइम पे एक रिमाइंडर, प्रोफेशनल टाइम। जब आपका ऑफिस खत्म हो रहा है, कभी कभी लेट हो सकता है, कोई बात नहीं, बट एक यूजुअल रूटीन अगर आप फॉलो करेंगे, दिस इज द टाइम, एक रिमाइंडर आ गया पर्सनल लाइफ। तो ये, दिस कैन क्रिएट अ कंडीशनिंग थिंग फॉर योर माइंड, कि नाउ दिस इज द टाइम टू स्विच। करते हैं हम लोग एक्सपेरिमेंट्स में भी यही चीजें करते हैं। दिस अगेन यू नीड टू डू विथ योर ब्रेन, विथ योर इमोशन, कि स्विच कैसे करना है, हैंडल कैसे करना है, कंट्रोल कैसे करना है। जब दोनों को बराबर इंपॉर्टेंस देंगे, तो ये सिचुएशन ही नहीं आएगी। Okay, I guess that's clear enough. So my next question is, what has been the most stressful situation you have faced or experienced so far, and how did you हम्म। handle it at your ओह, workplace or even in your personal life? बट आई थिंक ये किसी ऑडियंस की खुद की सिचुएशन आती है, और अगर हम उससे डील कर पाती तो ज्यादा अच्छा होता। प्रोफेशनली Any, व्हाट आई any, फेस, yeah, हाँ, professionally maybe प्रोफेशनली, then. Hmm. personally definitely I will not go, because that is personal definitely. And Definitely. professionally I can discuss. So professionally, what we feel a stressful situation, when you are dealing, uh, what you want to practice, ठीक है, चाहे वो इथिकल प्रैक्टिसेस हो, चाहे आपके सभी की अपनी अपनी आइडियोलॉजी होती है कि उन्हें ये फॉलो करना है। और कई बार आप ऐसी सिचुएशन में स्टक हो जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम वर्किंग विथ सम लीगल केस, तो वहां पे ऊपर से आपके ऊपर में प्रेशर है, ठीक है, यू आर गेटिंग कॉल्स कि इसमें ये करना है, इसमें ये नहीं करना है। एंड एज अ प्रैक्टिशनर, और या फिर आपको पता है कि वो आपके हाथ में होल्ड है, आपके हाथ में वो पावर है, उस पावर का मिस यूज ना हो जाए, दैट इज मोस्ट स्ट्रेसफुल सिचुएशन। और कई बार जब आप सही कर रहे होते हैं ना, तो आपके आपस के ही लोग या आपके अपने लोग ही आपके अगेंस्ट हो जाते हैं। और उसको कैसे हैंडल किया जाए विदाउट बीइंग रॉन्ग ऑन योर आइडियोलॉजिकल पाथ, दिस इज समथिंग विच इज वेरी स्ट्रेसफुल एज अ कंसल्टेंट, और एज अ, मतलब Okay. इन प्रोफेशनल लाइफ वी Mhm. ऑलवेज फेस दिस। Okay. और कई बार Okay. कई लोग हर्ट भी हो जाते हैं। आई वुड लाइक टू से सॉरी ऑन दिस पब्लिक प्लेटफॉर्म इफ एनी वन ऑफ इज हियर, ठीक है, आई नो देयर आर सम एक्ट्स, लोगों को लगता है कि ये गलत हो गया, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कभी ना कभी जब हम कुछ चीजें ऐसे फॉलो कर रहे होते हैं जो करना बहुत जरूरी है, उस केस में हमें रिलेशनशिप को बिल्कुल असाइड करना होता है, और हमें हमारी प्रोफेशनल ड्यूटीज पे रहना होता है। तो दिस इज समथिंग, वो पर्सनल नहीं होता है, दैट इज डेफिनेटली ओनली प्रोफेशनल। एंड एज एन एक्सपर्ट प्रोफेशनल,
we need to be on this path. Okay, the sub part of this question that I would again Mm-hmm. like to ask you to elaborate the same thing is, have you ever come across a situation where you had to advise your colleague to calm him for, a deadline, maybe if he's stressed out by thinking about a particular deadline? What advice would you give him to calm down him? To calm down him. So Yeah, हमारे लिए ना calm बहुत him easy down. होता है, relaxation technique are very famous in our fraternity. ठीक है, as a psychologist we always provide this thing to our patient for the anxiety. So whenever we feel like one colleague or maybe some co-worker or maybe some intern or team worker is feeling like stressful, then we always provide them with the relaxation therapy. There are different parts of the relaxation therapy. So sometimes we use with the music, relaxation music, sometimes we use the muscle relaxation technique, or sometimes we use just normal deep breathing exercises. So accordingly, because we know the person की कैसी personality है, what is the situation, how he can deal, क्योंकि उनकी हमें हमें पता है कि उनकी ओपनिंग स्ट्रेटेजी किस लेवल पे है, तो उसके अकॉर्डिंगली जो हमारी फर्स्ट एडवाइस होती है वो रिलैक्सेशन टेक्निक यूज करने की होती है. देन वी आस्क कि इफ यू आर कंफर्टेबल, इफ एनीथिंग एल्स बॉदरिंग यू, you can share with me, you can share with me as a friend. और उसमें क्या एक सबसे बड़ा इशू ये होता है, बिकॉज when you are working in the same team और when you are working in the same profession, कहीं ना कहीं वो एक बहुत बड़ा हडल है कि अगर मैं बताऊंगा तो मेरी प्रोफेशनल वीकनेस ना चली जाए. तो इन दैट टाइम वी नीड टू reassure them कि नहीं, you can share with us, you can confine in with us. हाँ, ये कहीं पे भी शेयर नहीं होने वाला है. जैसे हम प्रोफेशनली शेयर करते हैं, प्रोफेशनल एथिक्स फॉलो करते हैं, सेम वी आर गोइंग टू फॉलो हियर ऑल्सो. सो दिस इज द बेस्ट एडवाइस वी कैन डू एंड वी ऑलवेज डू. Okay, that is, I guess, clear enough again. Moving towards our next question, we know stress and we know its causes, but still, the main question that remains is, what is that high time when we come to know that, okay, now I have to actually go out and seek some help? I have to consult a doctor. When would I want to go out and consult a doctor? When would that situation be, or how do I realize that, okay, now I really have to go out? या सो एज वी डिस्कस अर्लियर कि इंडिविजुअली कैसे डील करेंगे, आपका जो क्वेश्चन था, वी डिस्कस कि आप एनालिसिस करेंगे, उसके बाद भी यू हैव क्लियर मॉडल, तो आप वो स्टार्ट कर देते हैं, वो आप स्टार्ट करते हैं, वो आप कंटिन्यू करते हैं. जब आपका वो मॉडल काम करना बंद कर दे, इट्स मीन जब आपके खुद के इंडिविजुअल रिसोर्सेस, आपकी खुद का, जितनी आपने देखा था कि मेरे अंदर जितनी पावर थी, जितनी मेरी वीकनेस थी, उनको भी मैंने कन्वर्ट करके देख लिया, मैंने सारी हायरार्की बना के देख ली, ये सब कुछ कर लिया, उसके बाद में भी इफ यू आर फीलिंग डिफिकल्टी, ठीक है, उसके बाद में भी आपको लग रहा है कि नहीं, आई एम नॉट गोइंग टू हेल्प माई सेल्फ, ये मुझसे नहीं हो पा रहा है, एंड यू आर सीइंग significant changes in your socio occupational life, social, occupational and personal life, you can say. Social life, when you are interacting with others, okay, with your friends, with your family, or with distant relatives. Professional life, occupational life is when you are consulting with your professionals or at your workplace. Then personal life, with your beloved, with your partner, with your kids, with your husband, with your wife. जब लगे कि वहां पे रिमार्केबल चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, आप बात बात पे इरिटेट हो रहे हैं, आप बात बात पे शाउट कर रहे हैं, आप हर छोटी सी बात पे, वो शायद आपको आपको फोकस करके नहीं है, बट तब भी आप उसको अपने ऊपर लेके जा रहे हैं, मतलब डेफिनेटली वन कैन आइडेंटिफाई कि यू आर नॉट हियर फिजिकली, यू आर हियर बट योर मेंटल स्टेट इज नॉट हियर. जब ये सिग्निफिकेंट चेंजेस आपको बिहेवियर में दिखाई देने लग जाए, देन यू नीड टू गो टू अ कंसल्टेंट or you need to go to a doctor to deal with the anxiety in some other clinical way. ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको दवाई ही हर बार लेनी होगी, मेडिसिन हर बार रिक्वायर्ड नहीं होती है. Okay, because एज पर that's जैसे हाँ, people feel it a that is lot the of it one when thing they have to take drugs or medicines about the same. So people feel, and they just हाँ, try to avoid it. they try to avoid. And what Mhm. एक और मैंने चीज बहुत जो कॉमन प्रैक्टिस देखी है विथ यंगस्टर्स स्पेशली, व्हाट दे डू, वो मेडिकल पे जाके ना क्योंकि ऑब्वियसली हम सबका थोड़ा बहुत तो वो जान पहचान होती है, वी जस्ट थिंक कि सर ना भैया नींद नहीं आ रही, कोई दवाई दे दो.
नींद के लिए दवाई दे दो। अब वो नहीं पता उनको, वो एंटी एंजाइटी ही है। यू डोंट नो Yeah. वो आपको रिक्वायर्ड है Mm. या नहीं है, आप सिर्फ अपनी प्रॉब्लम को सप्रेस करने के लिए उसे यूज कर लो। नींद Yeah. नहीं आने के बहुत से रीजन हो सकते हैं, उस नींद नहीं आने में शायद और भी आपके सिम्टम्स है जिनको आपने अवॉइड कर दिया है, उनको भी ध्यान में रखते हुए तो बेटर है कि कभी भी मेडिसिन, माय मतलब दिस इज माय ऑलवेज, I always advise कि please don't take any medicine without the consultation with psychiatrist, especially when we are talking about mental health issue। मैं ये भी नहीं बोलूंगी कि आप फिजिशियन से कंसल्ट करके मेडिसिन ले लीजिए, ही इज फिजिशियन। कार्डियोलॉजिस्ट आपको एंटी एंजाइटी नहीं सजेस्ट कर सकता या एंटी डिप्रेसेंट नहीं सजेस्ट कर सकता, ऑल दो वी ऑल नो मेडिसिन कौन सी हैं क्या है, बट उनकी स्पेशलिटी नहीं है। सो वी नीड टू रिस्पेक्ट दैट थिंग ऑल्सो। आप उसके बाद में हो सकता है आप पहले अगर साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, वो आपसे बात करते हैं, देन दिस फर्स्ट फर्स्ट सेशन विल बी और एक जर्नल सेशन होगा आपका। उसमें आपसे ऐसा कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। लोगों को बहुत डर भी लगता है कि साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे वो हमें काउच पे लिटाएंगे, हिप्नोटाइज करेंगे या ऐसा कुछ होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। दैट इज अ डिफरेंट वे ऑफ थेरेपी इफ इट इज रिक्वायर्ड। वो सबका अपना अलग अलग स्टाइल है, बट नॉर्मली दे टॉक, Mm. जनरल टॉक, ठीक है, वो परफॉर्म Okay. करेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा व्हाट दे वांट टू नो, वो उनको पता चल जाएगा। एंड वन मोर थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, साइकोलॉजिस्ट कैन नॉट रीड द माइंड, कि आप जाके बैठोगे और उन्होंने आपके Okay. बारे में सब कुछ पढ़ लिया, ऐसा Mhm. नहीं होता है। ठीक है, वी Mhm. आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, वी नीड सम स्टिमुलस। जो हम बात करते हैं, बातों में हमारी टेक्निक्स होती है पूछने की, तब हमें पता चलता है किसी इंडिविजुअल के बारे में। आप मेरे सामने आके नॉर्मल बात कर रहे हो, उसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको असेस कर रही हूँ। ठीक है, तो पीपल हु अवॉइड साइकोलॉजिस्ट की इनसे बात नहीं करना है, इनको सब पता चल जाएगा मेरे बारे में, ये भी आप अपने मन से निकाल दीजिए। जस्ट गो टू देम, स्टार्ट टॉकिंग टू देम, वो अपने आप हैंडल करेंगे। अगर उन्हें रिक्वायरमेंट लगा कि नहीं आपका एंजाइटी लेवल बहुत बढ़ चुका है एंड यू नीड मेडिसिन, देन दे विल रेफर टू यू साइकेट्रिस्ट। उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज जब इनिशियली हम स्टार्ट करते हैं और अगर आप थेरेपी फॉलो कर रहे हैं साथ में, तो बाय द टाइम धीरे धीरे जैसे जैसे थेरेपी पे इम्प्रूवमेंट आता है, आपकी मेडिसिन का डोज कम होता चला जाता है और धीरे धीरे मेडिसिन बंद हो जाती है, थेरेपी भी आपकी खत्म हो जाती है। एक फेज के आने के बाद में हम आपको मेंटेनेंस थेरेपी पे डालते हैं, वी एडवाइस, क्योंकि थेरेपी में एक सबसे बेटर चीज पता है क्या है, हम आपको टेक्निक सिखा रहे हैं। There are some Mhm. relaxation techniques especially for stress and anxiety. There are some behavior modification technique, वो टेक्निक आप सीख रहे हो, वो आपके लिए लाइफ टाइम लेसन है, वो आपसे कोई लेने नहीं वाला, वो आपने आपकी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग सीखा है। देयर इज वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, पीपल थिंक कि मैंने साइकोलॉजिस्ट को विजिट किया है या आई नो द थेरेपी सो आई कैन एडवाइस टू अदर्स। नो, आपको जो थेरेपी कराई गई है, आपको जो टेक्निक्स एडवाइस की गई है, वो आपकी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग की गई है, राइट? पर्सनालिटी, योर बैकग्राउंड, योर रिसोर्सेस, ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट थी, उसके अकॉर्डिंगली मैंने आपको थेरेपी एडवाइस दी। ठीक है, ये सेम थेरेपी आप किसी और को एडवाइस नहीं कर सकते, वो कई बार एडवर्स इफेक्ट भी दे सकती है। ठीक है, यू कैन सजेस्ट कि मुझे प्रॉब्लम थी, मैं गया साइकोलॉजिस्ट के पास थे, मैंने इतने टाइम पे ट्रीटमेंट फॉलो किया, उसके बाद में एवरीथिंग इज ओके। ठीक है, तो जाना मतलब आपको जो सजेस्ट करना है वो ये करना है, उनको मोटिवेट करना है कि यू कैन गो, दिस शुड बी अ नॉर्मल प्रैक्टिस। सो दिस इज द वे टू हैंडल द सिचुएशन इन बेटर वे एंड टू मोटिवेट मोर पीपल। जैसे फ्रेंड्स के साथ में भी कई बार होता है, कुछ लोगों ने किया होता है सेशन अटेंड, उनको लगते हैं बहुत हेल्पफुल लगते हैं, तो you can motivate them with your success story, what you were feeling before the session or before deciding to go to a psychologist, and how you are feeling now after completing your therapy session or after resolving your issues. This is the way you can do. I Okay, think so we are now um, more clear with this. yeah, so we'll move on to the live questions. So there's this Mm-hmm. Miss Shivani Singh, and she's Mm-hmm. asking that, ma'am, my question is stress linked to anxiety and panic attacks? Yeah, definitely. As I already mentioned, Shivani, so stress is the basic level. ठीक है, अगर स्ट्रेस बहुत टाइम तक ट्रीट नहीं हुआ तो वो धीरे धीरे एंजाइटी में कन्वर्ट होगा। एंजाइटी का बिल्कुल सीवियर फॉर्म जब है, जब आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, देयर इज नो वे आउट, योर ऑल मेंटल फिजिकल जितनी भी फंक्शनिंग है आपकी, वो उसको डील नहीं कर पा रही है, तब आपको पैनिक अटैक शुरू होते हैं। सो पैनिक अटैक, यू कैन से सीवियर लेवल ऑफ द एंजाइटी।
सो डेफिनेटली और स्ट्रेस इज लिंक्ड टू एंजाइटी एंड पैनिक अटैक। पैनिक अटैक के साथ एक और भी इशू है, कभी कभी जैसे एक बार पैनिक अटैक हुआ, उसके सेकेंड टाइम पे पैनिक अटैक में मैक्सिमम टाइम, क्योंकि पहले सिचुएशन में ये चीज हो चुकी है, वो स्ट्रेस आपके दिमाग में हमेशा रह जाता है। और वो स्ट्रेस के कारण जैसे ही आप उस ऑरा में आते हो जहां पे थोड़ा सा भी स्टिमुलस आपको मिल रहा है, पैनिक अटैक आपको फिर से हो जाता है। सो ये तीनों चीजें आपस में लिंकेड हैं। अगर स्ट्रेस के लेवल पे ही हम कंट्रोल कर लेंगे तो एंजाइटी और पैनिक के लेवल तक नहीं पहुंच पाएंगे। दैट्स व्हाई वी आर अगेन एंड अगेन सजेस्टिंग कि ट्राई टू आइडेंटिफाई योर सिम्टम्स व्हेन यू आर फीलिंग स्ट्रेस एंड गो आउट और वर्क ऑन इट। डोंट सप्रेस कि नहीं कोई बात नहीं, 2 दिन है, 2 दिन के बाद ठीक हो जाएगा, मूड खराब है, ऐसे ही होता रहता है। मतलब ये फैमिली में भी होता है ना हमारा, कोई बात नहीं मूड खराब है ठीक हो जाएगा। वी नेवर अटेंड सच काइंड ऑफ कंप्लेंट सिंसियरली कि हाँ दिस कुड बी समथिंग जो फिजिकली मेंटली आप पे इम्पैक्ट डाल सकती है। सो अगर आप इनिशियल लेवल पे उसको कर लेंगे तो आगे जाके ना ही आपको एंजाइटी के लेवल पे आएंगे और पैनिक तो डेफिनेटली नहीं आएंगे। Okay, next हम्म question is from Parvinder Kaur, and she is asking, हम्म kindly send some relaxing techniques, ma'am. What are some some relaxing relaxation, techniques that we can definitely use या सो to मैम reduce our वेरी stress level? इजी, वेरी इजी, वेरी इजी। अगर मतलब आप यहाँ पे भी बैठ के करना अगर चाहें तो सबसे बेस्ट वे होता है डीप ब्रीदिंग रिलैक्सेशन टेक्निक। ठीक है, जो मैंने मसल्स बोला वो सबसे एडवांस लेवल है, वो एक प्रॉपर टेक्निक है जिसके लिए आपको डेफिनेटली फिजिशियन की या क्लिनिशियन की जरूरत होगी, उसके सुपरविजन में करना होगा। आप अभी घर पे जो कर सकते हैं, जैसे अभी हम सेशन में ही हैं, जस्ट क्लोज योर आईज, लूज योर बॉडी, यू कैन सिट डाउन और यू कैन लाई डाउन, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे। आप रूम को डार्क कर लीजिए, अगर आपको डार्क से प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि कई लोगों को अंधेरे से प्रॉब्लम होती है, तो वो लाइट थोड़ी डिम कर सकते हैं। यू कैन यूज सम बैकग्राउंड म्यूजिक, चाहे वो यूट्यूब पे आप यूज कर लें या फिर आप जैसा भी हो। वी सजेस्ट इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, मतलब विदाउट वर्डिंग्स के, पूरा प्रॉपर गाना ना हो, सिर्फ ट्यून हो, वो आपके बैकग्राउंड में हो, वो आपको ज्यादा हेल्प करेगी। एंड देन आप बॉडी बिल्कुल लूज करके फील लाइक देयर इज नो वेट, सिर्फ आपको बॉडी पे आराम से फोकस करना है, आप आराम से हैं। उसके बाद में स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर ब्रीदिंग रेट, हाउ यू आर इनहेलिंग, हाउ दिस इज गोइंग इनसाइड योर बॉडी, इन योर लंग्स, इन योर स्टमक। वो हम कभी भी जैसे नॉर्मली आई एम टॉकिंग टू यू, यू आर टॉकिंग टू मी, मुझे नहीं पता ना मेरा रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑटोमेटिकली चल रहा है, वो ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम है। बट उस टाइम पे वी नीड टू फोकस हाउ इम्पोर्टेंट इट इज, दिस इज बेसिक ऑफ द लाइफ। अगर ये बंद हो गया तो मेरी लाइफ नहीं रहेगी। उस टाइम पे आपको वही फोकस करना है कि इनहेल जब आप कर रहे हैं, धीरे धीरे उसको फील कीजिए बॉडी में, कम से कम 2 से 5 मिनट तक ये करके देखिए। उसके बाद में फोकस ऑन दिस थिंग कि जब भी आप इनहेल कर रहे हैं यू आर टेकिंग ऑल द पॉजिटिविटी फ्रॉम द ऑरा। ऑरा इज समथिंग जो आपका बैकग्राउंड है, जो आपका इन्वायरमेंट है, उसको हम ऑरा आइडेंटिफाई करते हैं। आपके थॉट्स, आपकी एनर्जी उसको पॉजिटिव और निगेटिव बनाते हैं। तो आप सिर्फ ये फील कीजिए, whenever I'm inhaling I'm taking all positivity from the aura, this is going inside, this is I'm restoring in my soul, in my mind, in my body, everywhere। और उसके बाद में आप नॉर्मली एक्सेल कीजिए माउथ से, जैसे हम मुंह बनाते हैं, whenever we feel relaxed what we do, so just take a deep breath। जब ये आप करना अगर रेगुलर बेसिस पे स्टार्ट करते हैं, सोने के पहले अगर आप 10 मिनट देते हैं या फिर आप मॉर्निंग में उठने के बाद में 10 मिनट देते हैं, और ये सिंपल एक्सरसाइज है, इसको आप फॉलो करना शुरू करेंगे, आपको अपने आप लगेगा आपके स्ट्रेस लेवल्स डाउन हो रहे हैं। देन वेन एवर द सिचुएशन कम, वेन एवर एनी एंजाइटी प्रोवोकिंग सिचुएशन इज देयर, just hold your hands like this, you can make a feast, tight feast, and start this inhaling and exhaling procedure। You will feel calm down, you will be more relaxed in just next 5 or 10 minutes। This is the best advice you can use for the stress management and as a relaxation technique। So I guess there were some wonderful, easy to do at home techniques, and we'll Mhm. definitely follow them. The next question is, Do it and yourself, it's an actually interesting question. DIV। uh-huh. Yeah, DIV, they're Uh, actually DIV. uh, uh, Ansh is asking a very interesting question. How can we mhm. enjoy stressful situations? We are all talking How about, can we the enjoy negative. Enjoy stressful stressful situations. situation? We
all talking अब right now about this is stress actually very and interesting. panic हाँ attacks and all, but how can we हाँ actually enjoy stressful situations? हाँ, सो इसमें क्या होता है, जो बेस्ट वे है, मैं इसको इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव से बताऊं, ये हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं कि हर कोई एंजॉय नहीं Yeah, कर सकता, बिकॉज एज वी definitely. डिस्कस पर्सनालिटी Yeah, डिफरेंट है। हम जैसे personality. अंश कर सकता है, आई थिंक मैं कर सकती Yeah. हूँ, देयर आर सो मेनी पीपल उनको ये पता है, जब हम लाइफ का एक्सट्रीम देख लेते हैं ना, कि एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन आपके पास में आई, आप सबसे पहले ये सोचो कि इसका एक्सट्रीम क्या हो सकता है। व्हाट कुड बी एक्सट्रीम पोजीशन, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा। व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ द लाइफ, क्या है वो। कैन एनीवन आंसर, व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ द लाइफ। Life, हम्म the लाइफ से सबसे ज्यादा lifespan of a प्यार है हमें। human. हम्म Yeah. लाइफ से सबसे ज्यादा प्यार है, उसी के लिए इतना कुछ कर रहे हैं हम। Yeah. सबसे उसकी मैक्सिमम लिमिट क्या है लाइफ की। 65 or 70, मतलब hardly फाइनली क्या होना 75. है, फाइनली क्या होना है, फाइनली डेथ होनी है। Everyone dies. Yeah, definitely. We all come दिस इज and द go मैक्सिमम लिमिट। without taking एक बार आप anything. सोच लो, एक बार आप सोच लो उसके बारे में, तो आपका वो डर खत्म हो जाएगा। होता क्या है ना, Yeah. जब आपका डर शुरू होता है, वो ऐसे Mm-hmm. स्टेजेस में चलता है, फर्स्ट स्टेज, Mm-hmm. सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज। अब मैंने अगर पीक सोच लिया कि मेरी ये पीक स्टेज है, ज्यादा ज्यादा क्या हो जाएगा, मरी तो जाएंगे। दैट्स इट। वहां पे आप इंजॉय करना शुरू कर देते हैं स्ट्रेसफुल सिचुएशन को भी। जब आप अपने डर पे, आप पीक को कंट्रोल कर लेते हैं, आपको पता है कि इससे ऊपर कोई डर बचा नहीं है, इससे ज्यादा कुछ होगा नहीं, तो आपका रियलिटी ओरिएंटेशन हो गया वहां कि यही हो सकता है, इसके ऊपर तो कुछ होगा नहीं मेरे साथ में। देन यू आर कंफर्टेबल। अब वो जो आपको फेजेस में डर आ रहा था, वो खत्म हो गया। देन यू कैन एंजॉय योर स्ट्रेसफुल सिचुएशन। ठीक है, अब जैसे कोविड ही था, लॉकडाउन खत्म नहीं हो रहा, लॉकडाउन खत्म नहीं हो रहा, मत होने दो। तुम वैसे भी बाहर जाके भी क्या करोगे यार, दिस इज अभी वैसे भी समर्स चल रहे हैं और हम सब घर में। अब उसके दूसरा एस्पेक्ट क्या है, हमें किसी को भी टाइम नहीं हो रहा है, राइट। वी आर मोर फोकसिंग ऑन अदर वर्क्स। हमने कभी भी सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे काम नहीं किया था। वी आर रीडिंग नाउ, वी आर वॉचिंग Mm-hmm. समथिंग जो हमने कभी भी कवर नहीं की थी, वो सबके लिए हमारे पास में टाइम ही टाइम है। सो दिस इज द Mm-hmm. पॉजिटिव एस्पेक्ट एंड वी आर एंजॉइंग। और क्या एंजॉय कर रहे हैं हम, लूडो एंजॉय कर रहे हैं, राइट। देयर आर अदर वेव गेम्स ऑल्सो जो Yeah, हम एंजॉय definitely. कर रहे हैं। Family सो time. वो आपका पर्सपेक्टिव है, आपका पर्सपेक्टिव है, आप उसको कैसे देखना चाहते हो। और वो जो डर है ना, जब आप उस डर की पीक पे पहुंचते हो, उसको कंट्रोल कर लेते हो, वहां पे आप एंजॉय करना सीख जाते हो स्ट्रेसफुल सिचुएशन को। Okay, all right. I guess Ansh, it's very हम्म clear. Okay, so moving towards our अंशु, next एनी question. अदर थिंग, अगर इसके बाद भी नहीं हो पा रहा है एंजॉय, तो लेट मी नो कि कैसे कर सकते हो और I I guess he's definitely enjoying it even now. हम्म Okay, so Kusum, she asked that, ma'am, I have a habit of sleeping with yoga nindra. Otherwise, I don't have a हम्म sound sleep at all. So, what do you want to say about that? Sleeping pattern and sleeping postures are also Can you affecting. repeat the question? Yeah, Someone having a habit of sleeping with yoga nidra, and and can you otherwise, they repeat the don't. question, Otherwise, please? she doesn't have a sound sleep. So, how do you Mm-hmm. think that, she's connecting a sleeping posture to stress? If she sleeps in a particular Hmm. posture, she sleeps well, she has a sound sleep, otherwise, she does not. So, do you think that Ma'am, sleep your postures are question. also related to stress, and or is just maybe OCD? नहीं, ऐसा नहीं है, ये ओसीडी से या स्ट्रेस से रिलेटेड नहीं है। देयर आर सम स्पेसिफिक पैटर्न। जैसे कई लोगों को आदत है, उनको अपने बेड पे नींद आती है, कुछ लोगों को स्पेसिफिक चीजों के साथ में, मतलब किसी को अपने पिलो से ज्यादा अटैचमेंट है, किसी को किसी टॉय से ज्यादा अटैचमेंट है, बट ये ओसीडी या किसी स्ट्रेस के साथ में रिलेटेड नहीं है। दिस इज अ हैबिट। व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट कि कंडीशनिंग इज समथिंग वी डू, कि हम अपने माइंड को, अपने बिहेवियर को कैसे ट्रेन कर रहे हैं, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है। तो आपने अपने माइंड को इस तरीके से ट्रेन कर दिया है कि जब आप योग निद्रा में हो रहे हो, तभी आप सोच रहे हो, सो पा रहे हो। योग निद्रा इज लाइक डीपर स्टेट, डीपर स्टेट, उससे ज्यादा रिलैक्सेशन आपको नहीं मिल सकता। बट उसके लिए मुझे बैकग्राउंड थोड़ा सा मैं ये जानना चाहूंगी मैम आपसे कि व्हेन यू स्टार्टेड टू स्लीप विथ योग निद्रा, क्या कोई कॉम्प्लिकेशन थे, क्या कोई इशू थे, या फिर जनरल प्रैक्टिस, क्योंकि कई लोग योगा की जनरल प्रैक्टिस भी करते हैं, उनका एक एक डेली रूटीन है, वो किस वे में आपने यूज किया था, वो ज्यादा स्पेसिफाई अगर आप कर पाए, तो आई कैन आंसर यू इन बेटर वे। बट दिस इज डेफिनेटली नॉट रिलेटेड टू ओसीडी और एंजाइटी, दिस इज वेरी नॉर्मल थिंग।
with conditioning. If she is here, I think she can write more Okay. about it कि when she So, started and how it was important that time, और वो कैसे शुरू हुआ था. थोड़ा सा बैकग्राउंड हमें और चाहिए होगा इस क्वेश्चन के लिए. okay. Here's another question asked by Suranj. How can we control our sudden anxiety and panic attacks? सडन एंजाइटी एंड पैनिक अटैक, जैसे मैंने टेक्निक आपको बताई थी. सडन एंजाइटी अगर बाई चांस हो रही है, जस्ट उस टाइम पे आपको कुछ और नहीं करना, आपको सिर्फ ये चीज, आई नो उस समय पे ये ध्यान करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मुझे क्या करना था. इवन जो रेगुलर क्लाइंट्स ही हैं जो ऑलरेडी रिलैक्सेशन यूज कर रहे हैं, उनके लिए भी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है कि उस समय पे मैं क्या करूं. तो सडन एंजाइटी को कंट्रोल करने के लिए, एंजाइटी पहले होगी फिर आपको पैनिक होगा. जब आपको लग रहा है कि एंजाइटी होना शुरू हो रही है, आप अगर किसी ऐसी सिचुएशन में, सोशल सिचुएशन में हैं, आप पहले थोड़ा सा वहां से हट जाइए, काम डाउन होके बैठ जाइए, हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है, सिप बाय सिप, एंड देन जस्ट होल्ड योर सेल्फ फॉर सम टाइम एंड स्टार्ट डीप ब्रीदिंग. अब वो डीप ब्रीदिंग आप जरूरी नहीं है कि उसी वे में करिए. अगर आपको लग रहा है मुझे, क्योंकि सबसे पहली प्रॉब्लम पता है क्या होती है, आपको चोकिंग फील होने लगती है, आपको ब्रीथलेसनेस होने लगती है. तो आप मुंह थोड़ा सा खोल सकते हैं जिससे कि आपको ऑक्सीजन सप्लाई प्रॉपरली मिले. जब ऑक्सीजन सप्लाई प्रॉपर होगी, आपका हाइपोवेंटिलेशन प्रॉपरली हो पाएगा, तब उसके बाद में एंजाइटी अपने आप काउंट डाउन हो जाएगी. तो इन सच काइंड ऑफ सिचुएशन यू कैन यूज दिस थिंग. कि अगर सांस लेने में दिक्कत भी लग रहा है कि मुझे अभी डीप ब्रीथ, तो आप डेफिनेटली तुरंत स्टार्ट नहीं कर सकते. आप मुंह खोल के सांस उस समय पे ले सकते हैं, और आराम से बैठ के धीरे धीरे से बस सिर्फ एक गिलास पानी पी सकते हैं. आफ्टर सम टाइम यू विल फील मोर बेटर. Okay, I guess that's clear enough again. Next question is from Shalini, and she asked, why we feel more sleepy when we are suffering through stress? Is this effect good for us? समटाइम इट अफेक्ट्स गुड एक्चुअली. दिस इज अगेन अबाउट द स्ट्रेटजीज, ठीक है. तो अब स्ट्रेटजी ये है, कुछ लोग चूज करते हैं, उनको पता है कि हम बहुत एग्रेसिव हो जाएंगे, हम बहुत रिएक्टिव हो जाएंगे उस सिचुएशन में, तो वो मतलब वहां से फ्लाइट मोड में चले जाते हैं, और वो Well, I guess again some technical glitches. So, meanwhile, I guess this is very, very clear to all of us that stress management is the need of the hour, and there are various techniques and various ways and various methods that we can use for stress management. And yes, exercises do help. The next question that should be regarding exercises, that what should be the pattern of our exercises, what should be the frequency of our exercises, and the next thing, I guess, as Dr. Shweta told, yeah, sleeping I'm patterns so also are good yeah. for stress. Sleeping adequately is again necessary for reducing your stress levels. Avoiding alcohol is definitely, and the perfect thing you can do at your comfort of the home is, as she mentioned, some of the few techniques. So I guess, and I hope you all should try them, and they would be really very beneficial. So getting back to our question, Dr. Shweta, that Yeah, was Anshika, I'm so sorry. There was some external disturbance. So the video and audio it's both. okay. So I'm sorry for the inconvenience. Now tell me the question again, what we were discussing. Yeah, so yeah, the question was why we feel more sleepy when we are suffering through stress, and is this effect good for us? Yeah, so Shalini, as we were discussing, see there are different ways कि स्ट्रेस को हैंडल करने का सबका अपना अपना तरीका होता है. जो लोग ज्यादा एग्रेसिव होते हैं, वो भी कभी कई बार चूज करते हैं कि अगर हम सो जाएंगे तो शायद रिलैक्स फील करेंगे. उस टाइम पे योर सेंटिमेंट्स, योर इमोशन, योर फिजिकल एनर्जी, योर एवरीथिंग इज ऑन द पीक व्हेन यू आर फीलिंग स्ट्रेस. तो यू कैन फील कि आप फिजिकली भी यू आर हाई, कि आपको बहुत ज्यादा आपकी हार्ट बीट बढ़ी हुई है, आपको स्वेटिंग भी हो रही है, आपको सारी चीजें हो रही है. मेंटली यू आर ड्रेनिंग आउट, कि बहुत सारे थॉट्स एक साथ चल रहे हैं, उनको कैसे कंट्रोल किया जाए. तो उस टाइम पे डेफिनेटली ऐसी पर्सनालिटीज जिनको पता है कि हम अग्रेसिव हो सकते हैं, हम हैंडल अभी नहीं कर सकते हैं, वी नीड अ टाइम आउट. उन केसेस में आपके लिए नींद जरूरी होती है. और कई बार नींद इसलिए आती है क्योंकि वो आपकी बॉडी का एक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स है टू डील विद द एंजाइटी, टू डील विद द स्ट्रेसफुल सिचुएशन. कई बार हम बहुत सी चीजें हमें नहीं भी पता, बट हमारी बॉडी को पता है कि इस टाइम पे कैसे डील करना है. तब आप स्लीपी फील करते हो, एंड दिस एक्चुअली गुड
फॉर अस समटाइम्स, क्योंकि उसके बाद में यू कैन फील द चेंज कि मैं पहले के मेंटल स्टेट में और अभी के मेंटल स्टेट में कितना फर्क है. सो एज पर मी, आई ऑलवेज इवन सजेस्ट कि अगर आपको लग रहा है कि आपसे हैंडल नहीं हो पा रहा है तो उस समय पे आप सोने के लिए जा सकते हैं. दिस इज अ हेल्दी पैटर्न. Okay. The question again related to the same thing is that, all right, the sleeping patterns are beneficial and all. What is the sleeping? How much do we should we sleep? What would be the correct pattern and number of hours suitable for sleeping? Is the again the same question. In the stressful situation or normally? Both, I guess, because normally we all know it's like 6 to 8 hours. Everyone recommends the same. But is there something स्ट्रेसफुल के else टाइम पे ना, for स्ट्रेस stressful के टाइम situation? पे आप, मैं ये डिसाइड नहीं कर सकते हम, बिकॉज यू नो कई बार आपको लगता है कि आप सो रहे हो हाफ एन आवर, दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर यू. ठीक है, एज पर द लेवल ऑफ स्ट्रेस, एज पर द सिचुएशन, एज पर यू, व्हाट इज योर रिक्वायरमेंट. तो कई बार आप हाफ एन आवर के बाद भी यू आर ओके. कई बार आप आंखें बंद करके सिर्फ आप, यू नो यू आर trying to control your emotion, you are just lying down, you are not एक्चुअली स्लीपिंग, बट इट्स जस्ट दैट कि आपने अपने सेंसेस को कंट्रोल करने के लिए रखा हुआ है, और वो आप 15-20 मिनट्स के बाद में यू आर ओके टू गो बैक टू द सिचुएशन एंड फाइट विद द सिचुएशन. सो इट डिपेंड्स हाउ यू फील, और आपके लिए वो कितनी रिलेवेंट है. कुछ कुछ लोग हैं जो सोते हैं तो आई थिंक वो 8-10 आवर्स तक भी कंटिन्यू कर जाते हैं. कुछ लोग हैं जो 2 घंटे के बाद में फ्रेश अप फील करते हैं. कुछ है जो हाफ एन आवर के बाद में. तो ये केस टू केस डिफर करता है, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफर करता है. देयर इज नो लिमिट फॉर दिस थिंग, देयर इज नो रिकमेंडेशन कि इतने घंटे सोने से यू विल बी आउट फ्रॉम द स्ट्रेस. ऐसा नहीं होता है. Okay, so that is an individual perspective. And moving on towards our next question, Jivisha Yadav asks, and I guess this is also a very good question again because every day we hear so many things in the newspapers or anywhere else. We find such conditions and situations. So she asks that how can we suppress the urge of self-harm when the anxiety or stress takes over? We have heard so many like Okay, societal acts are also one of the I examples of the know. same. So So self how harm can is we again, suppress the urge of self harm? so that self harm is again, related to some clinical condition. I'm not going to name it clearly because people are more prone with Google search कि अच्छा ये इससे related है, चलो Google search करते हैं. But definitely self harm is something which is a serious matter and always required a clinical supervision. Self harm की urge तब ज्यादा होती है जब आप stressful situation में होते हो, when you are low with your confidence, लो विथ योर कॉन्फिडेंस, लो विथ योर सेल्फ एस्टीम. उस केस में आपको लगता है कि अब इसके आगे कुछ और हो ही नहीं सकता. सो सेल्फ हार्म इज समथिंग कि मैं, कई बार वो अटेंशन सीकिंग भी हो जाता है, और कई बार क्योंकि आप स्टक हो जाते हो तो आपको लगता है मुझे सब कुछ खत्म कर देना है, और कई बार एज पर पर्सनालिटी वो आपको कहीं ना कहीं प्लेजर भी देता है. सो देर आर 3 डिफरेंट वेज फॉर द सेल्फ हार्म कि कौन, जब आप कर रहे हो स्ट्रेसफुल सिचुएशन में उससे आपको क्या गेन हो रहा है. अब उस अर्ज को कंट्रोल कैसे किया जाए, उस अर्ज को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि उस समय पे इंसाइट मन में लेके आना कि अगर मेरे सेल्फ हार्म करने से सिचुएशन ठीक हो सकती है, दैट इनसाइट थॉट शुड बी देयर ऑन फर्स्ट प्रेफरेंस, कि सेल्फ हार्म करने से क्या क्या होगा. यूजुअली जो लोग सेल्फ हार्म की प्रैक्टिस में होते हैं उनको उस टाइम पे पेन फील नहीं होता है. जब वो लॉस हो जाता है उसके बाद में दे रियलाइज कि हाँ, हाउ पेनफुल इट वाज, हाउ अग्रेसिव इट वाज. अब उस अर्ज को कंट्रोल करने के लिए यू कैन यूज सम थॉट स्टॉपिंग टेक्निक. थॉट स्टॉपिंग टेक्निक इज अगेन अ टेक्निक which we use in the cognitive behavior therapy, which is very effective. थॉट स्टॉपिंग के लिए कि सेल्फ हार्म अगर आपको हो रहा है, पहले आप इंसाइटफुल थॉट एक बार लेके आइए, उसके बाद में जस्ट से स्टॉप, ट्राई टू डिस्ट्रैक्ट योर सेल्फ दैट टाइम. तो वो उसके लिए वो स्टॉप, जब आप बोल रहे हो, आप लाउडली बोल रहे हो या आप इंटरनली बोल रहे हो, वो आपको हेल्प करेगा टू break this chain, because that thought is coming as like as a flow. Do it, you need to do it, you have to do it. Such kind of thoughts is coming as per as echo in your mind. the, whosoever doing the self harm, if we talk with them after the situation, तो उनके मन में यही होता है कि उस समय पे मेरे मन में कंट्रोल ही नहीं था, दिस वाज जस्ट हैपनिंग, वो हो गया मुझे पता नहीं चला. तो उस समय पे वो उनके लिए Definitely. इको की तरह काम कर रहा है. तो उनको सबसे Mhm. पहले वहां पे कट करना है, यू नीड टू से स्टॉप लाउडली, चाहे वो इंटरनली बोलो आप या फिर जैसे अभी हम बैठे हुए हैं, जस्ट से स्टॉप.
स्टॉप के बाद में व्हाट यू out कैन loud. डू, द अगेन दैट Mhm. डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, जस्ट काम डाउन योरसेल्फ, क्योंकि वो बिल्कुल मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे करना है, दैट फिजिकल मेंटल रिएक्शन आर ऑन द पीक. So to Yeah, control that peak, to control that intensity, again you can use deep breathing exercise to relax yourself. Then you can mhm. use any distraction technique, any distraction technique. कुछ लोगों को उस समय पे scribble Yeah, करना like अच्छा you लगता है. mentioned before, like हाँ, anything. instrumental हाँ, music, or उस yeah. that you Mhm. can use, and in the order ki first you say stop, then you use relaxation technique, then you use Mhm. distraction technique. This is something which you can use to control your self harm urges. And if you are repeating the behavior, I would suggest ki please go and talk to a clinical psychologist. This is much important. Okay. Well, moving towards our next question, Anshu asks that there are Mm-hmm. people who prefer bursting out their stress and others who stuff it inside, and both is Mm-hmm. unhealthy. So, what is Mm-hmm. the best way to deal with stress, keeping in mind specific unhealthy coping mechanisms? Or can simply, i like, can we because, repeat the question, yeah, Reva? like Hmm. I'll simplify it. Like, people Mm-hmm. are like more, few people are extrovert about their stress. They come out openly and they talk about it. And few of them, they Mm-hmm. just stuff it all inside. They're not able to go out and say that out loud and tell that to people. So, what is the best way to deal with stress, keeping in mind in specific unhealthy coping mechanisms? in that way we always advise journal writing, और जिसको जर्नली हम कहते हैं डायरी, एक हमारी फ्रेंड हुआ करती थी पहले, राइट? दैट इज एक्चुअली अ साइंटिफिक टेक्निक स्पेशली इनटू क्लिनिकल साइकोलॉजी, कि यू कैन एडवाइज जो लोगों को लगता है कि वो बात नहीं कर सकते, बहुत से इश्यूज हैं या दे डोंट हैव एनी रिसोर्सेज, उसकी जगह पे सेल्फ हार्म करने की जगह पे या कोई भी अनहेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म यूज करने की जगह पे, अगर आपको लग रहा है आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, यू आर नॉट getting any way out कि कैसे किया जा सकता है, just take a paper, whatever coming in your mind, whatever coming in your mind. वो जरूरी नहीं है कि वो किसी सिस्टमेटिक वे में हो, कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, just write about it. लिखिए, लिखते जाइए, लिखते जाइए, लिखते जाइए. दैट फ्री फ्लो राइटिंग शुड बी देयर, चाहे उसका मीनिंग निकल रहा है या नहीं निकल रहा है. दिस इज हेल्पिंग यू टू वेंट आउट योर माइंड, टू वेंट आउट योर नेगेटिव थॉट्स, टू वेंट आउट योर स्ट्रेस. तो वो होने के बाद में यू कैन डिस्ट्रॉय इट, वो आपको स्ट्रेस फ्री कर देगा उस टाइम पे. देन इसके बाद में यू विल बी मोर क्लियर कि व्हाट इज द एग्जैक्ट सिचुएशन, व्हाई आई एम फीलिंग स्ट्रेस, वो ऑर्गेनाइजेशन अपने आप आ जाएगा. और फिर आपकी हेल्दी कोपिंग स्ट्रेटजीज आप वहां पे यूज कर सकते हो, वो मैकेनिज्म आप यूज कर सकते हो. Okay, I hope Anshu it's clear enough. Next question is, I find it very relatable to the current situations as Hmm. well. Dipesh Hmm. asks about his UPSC exam, and I'll also, on my behalf, I'll correlate it to the 12th board exams. They're also pending, and all the JEE and PMT Hmm. exams, they're also on hold. So he asks, I'm preparing for UPSC. I'll be appearing for my first attempt soon. How do I keep myself motivated all the time, and how do I keep stress and anxiety away during preparation and during exams and interviews? So especially for UPSC or for any exam, when it Uh, comes, well, I yeah, know. Bolo bolo, you can say what you yeah, were I was adding. just, I was not adding, I was just clearing it up. Hmm. We'll answer for the UPSC first, and then we'll take it on the 12th Hmm. board examinations and the other national level exams that are put on hold. Okay, so for the UPSC, as we all know, it's a competitive exam, and I think highest competitive एग्जाम इन आवर कंट्री, राइट? यूपीएससी इज द एक्सट्रीम कि इसके ऊपर कुछ है ही नहीं, राइट? अब ये Right. जो थॉट है ना, इसके साथ में ही स्ट्रेस आ जाता है. दिस इज द हाईएस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम. तो वो जो स्ट्रेस है, अगर आप यूपीएससी को एक जनरल एग्जामिनेशन की तरह प्रिपेयर करेंगे, टू कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड एंड टू कीप योर सेल्फ स्ट्रेस एंड एंजाइटी फ्री इन द एग्जामिनेशन, आफ्टर द एग्जामिनेशन एंड ड्यूरिंग द इंटरव्यू, वो प्रेशर जब आप उसको अगर इम्पोर्टेंस इतनी ज्यादा बढ़ा रहे हो, इट इज इम्पोर्टेंट डेफिनेटली, बट वो इम्पोर्टेंस का लेवल उससे रीच नहीं होना चाहिए. आपकी इंडिविजुअल कैपेसिटी से अगर आउटरीच कर रहा है, वहां पे वो आपको स्ट्रेस दे रहा है. ठीक है, सो ठीक है, अब वो है, बट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर इट, यू आर द बेस्ट वन हु नो अबाउट इट.
UPSC is just an exam. Examiner is going to ask you the specific question जो आपने already prepare किया हुआ है. That self confidence is required बार बार. And the best part is don't compare yourself with others. जैसे जब आप लोग मॉक टेस्ट कर रहे होते हैं या फिर आप बात भी कर रहे होते हैं कि मॉक टेस्ट में कितने आए, कितना टाइम लगा, ये सारी जब चीजें हो रही होती है ना, वो भी आपकी इंटरनल एंजाइटी को बहुत बढ़ाती हैं, हर बार मोटिवेट नहीं करती हैं. एंड वन मोर थिंग, वी नेवर रिवील द रियल पिक्चर. ठीक है, हम हमेशा दूसरे को ज्यादा ही बताते हैं और उससे हमें नहीं पता कि सामने वाला और कितना प्रेशर फील कर रहा है. सो यू फोकस ऑन योर सेल्फ. अगर आप सिर्फ अपनी स्टडीज पे ही फोकस कर रहे हो, उसके साथ में एक वर्क लाइफ बैलेंस भी बना के चल रहे हैं, 24 hour studies is not required for the UPSC. You can check the interviews of UPSC जिन्होंने क्लियर किया है, IAS IPS, उन्होंने किसी ने ये सजेस्ट नहीं किया कि हम 24 hours पढ़ रहे थे. देर आर सम पीपल जिन्होंने 8 घंटे भी पढ़ाई की है, 6 घंटे भी पढ़ाई की है, बट वो Yes, yes, फोकस, वो definitely. कंसंट्रेशन इज मोर रिक्वायर्ड. So if you are focused, you are clear with your goal without, any, जैसे we discuss कि stress is required, but fear is not required. When you are attaching fear with this examination, then you are getting into this situation. मोटिवेशन कैसे रहेगा? क्योंकि आप अगर खुद से खुद का कंपटीशन रखेंगे, आपने एक मॉक टेस्ट किया, उसके बाद में दूसरा ठीक है, अगर डाउन आ भी गया, सो यू कैन एनालिसिस कि ठीक है, इस टाइम पे सिचुएशन ये थी, या सब्जेक्ट मैटर चेंज हो गया था, या ये यूनिट उससे ज्यादा टफ थी, फिर मैं थर्ड करूंगा तो शायद मैं उसके कंपैरिजन में होऊंगा या उससे बेटर कर पाऊंगा. तो वो कंपटीशन अगर आप खुद का खुद के साथ में करेंगे तो आप ज्यादा मोटिवेटेड रहेंगे. आपकी जो फर्दर एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर्स आ रहे हैं, इन टर्म्स ऑफ योर पीयर ग्रुप, इन टर्म्स ऑफ योर फैमिली, इन टर्म्स ऑफ योर, आप न्यूज में देख रहे हैं, ये सारी जो चीजें हैं वो आपके कंट्रोल हो जाएंगे. So this is the way to keep yourself motivated. And one more thing, ये एक और चीज है, मैंने कई स्टूडेंट्स स्पेशली इनटू JNU, एज यू नो कि JNU में मैक्सिमम स्टूडेंट्स आर प्रिपेयरिंग फॉर UPSC ओनली. सो व्हाट वी फील ड्यूरिंग द काउंसलिंग सेशन, उनको लगता है कि अगर UPSC नहीं हुआ ना, तो ये हमारे लिए मतलब खत्म है, एंड है, इसके आगे कुछ भी नहीं है. देर आर मेनी स्टूडेंट्स हु इवन ट्राई टू एंड देयर लाइफ ऑल्सो. सो दिस इज माई एक्चुअली रिक्वेस्ट कि ऐसा नहीं है, कोई भी एग्जाम आपका एंड पॉइंट नहीं हो सकता है. Try to love yourself first. Try to give importance to your life first. Only then you can prioritize, you can give that importance to any other thing. There's all things you have so many attempts. और अगर by chance नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं ना. Try to find other perspective in the life. Definitely. There are दिस इज always other समथिंग. उसको, chances in life. या उसको एंड पॉइंट मत बनाओ. तो ये सब जब आप हटा दोगे, फियर जब उससे एसोसिएटेड जो फियर है, अगर वो आपने हटा दिया, देन यू विल एंजॉय. लाइक ठीक है, अगर बाय चांस नहीं भी हुआ कोई बात नहीं, आप उस प्रिपरेशन को एंजॉय करोगे. कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ प्रिपेयर किया है, अपेयर नहीं किया, या सक्सेस नहीं हुए, बट दे Yeah. आर कंटेंट. आपने उससे कुछ तो लिया, कुछ तो आपको अर्न हुआ. वो कंटेंट तो आप ही के पास है, जो लाइफ टाइम आपके पास रहेगा, वो नॉलेज आप ही के पास में है. सो ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट वी आर अचीविंग. अगर नहीं भी होता है तो भी मुझे क्या मिलेगा, Yeah, एंड definitely. Like, जनरलाइज. yeah, like we hear, there's this saying that success is never final, success is never ending, and the failure is never final. So keep on trying because success will never end, and the failure would never be the final step. So I एंड कीप guess योर the सेल्फ page कॉन्फिडेंस was हाई. not clear enough. Yeah, definitely. Okay, moving towards our next question. We have often heard some rumors, or maybe I don't know what of them are true and how much are they true or something. But we have heard that stress causes reproductive problems and also weakens our immune system. So, what's your take on both of them? इट एक्चुअली हैपेंस. वो रूमर्स तो नहीं बोलूंगी मैं, क्लिनिकली कई बार प्रूवन भी है, कि Yeah. स्टडीज भी है इसके Okay. ऊपर. इवन वी एडवाइज व्हेन एवर एनी फीमेल क्लाइंट इज प्लानिंग फॉर द फैमिली, वी ऑलवेज एडवाइज कि प्लीज अपने स्ट्रेस लेवल थोड़े से कम कीजिए. वी ऑल्सो गेट रेफरल्स ऑल्सो फ्रॉम द गाइनी कि स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा है. सो इम्यून सिस्टम के साथ में भी, अभी जैसे जब कोविड स्टार्ट हुआ था, पीपल वर सरप्राइज कि वी ऑल्सो स्टार्टेड विद अ हेल्पलाइन इनिशियली ओनली इन द मार्च. सो पीपल वर क्वेश्चनिंग कि कोविड के टाइम पे मेंटल हेल्थ की क्या जरूरत है. सो देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन योर ब्रेन एंड योर बॉडी. ठीक है, अगर आप अच्छा सोचोगे तो वो आपके फिजिकल एक्टिविटी पे भी फर्क डालेगा, पॉजिटिवली डालेगा. ठीक है, वही चीज होती है जब आप पॉजिटिव सोच रहे हो, जब आप हेल्दी सोच रहे हो, तो आपका इम्यून सिस्टम हेल्दी हो रहा है, इम्यून सिस्टम आपका स्ट्रांग हो रहा है.
और वो सेम वे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा, बट डेफिनेटली अगर पॉजिटिव है तो वो आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगा मेडिकली। मैं ये नहीं बोलूंगी कि परसेंटेज बहुत ज्यादा है, बट या 10 to 15% तो है, एंड इट इज इम्पोर्टेंट, इट इज लिंकिंग। Okay. Um, well, that definitely proves that it's not a rumor, it's connected, and we should take It care is about it. connected, it is Yeah. research wise also it is connected. Mhm. So we'll definitely have to take care about it a lot. Moving towards our next question is asked by Ansh again. Can we, in which, he's asking that, mental health, why is it still a taboo in India? That's we already, even we are also struggling with this taboo in India, because no one wants to talk. कोई इस बारे में बात ही नहीं करना चाहता, बात नहीं करना चाहता, और उसके बाद में एक्सेप्टेंस नहीं है। सो एज वी नो, स्किजोफ्रेनिया इज समथिंग जो सबसे हायर डिग्री मानी जाती है मेंटल हेल्थ इश्यूज में। ठीक है, दैट इज क्लासिकल कंडीशन बेसिकली। तो और Okay. सबसे ज्यादा ये कॉमन उन लोगों में होता है जिनकी इंटेलिजेंस हाई होती है। सो मैक्सिमम सीईओज, और आपने कई स्टोरी सुनी होंगी डॉक्टर्स की, सीईओज की। अभी लास्ट ईयर इफ यू रिमेम्बर, सीसीडी ऑनर ही कमिटेड सुसाइड। तो व्हाट वाज द प्रॉब्लम? और हमें बाहर से लग रहा था कि सब कुछ ठीक है। ऐसे Mhm. बहुत से लोग हैं, हमें आते जाते भी लाइफ में मिलते हैं, हमारी पर्सनल लाइफ में भी मिलते हैं, हमारी फैमिली में भी मिलते हैं, प्रोफेशनल भी मिलते हैं। नेक्स्ट डे वी गॉट टू नो कि ऐसा कुछ हो गया, एंड वी ऑलवेज इन द शॉक कि ऐसा कैसे हो सकता था। क्यों? क्योंकि वो टैबू था। वो टैबू इसलिए था क्योंकि एक्सेप्टेंस नहीं है। वी डोंट हैव दैट एक्सेप्टेंस। जिस दिन हमने हाथ खोल के लोगों को वेलकम करना शुरू किया, इफ यू आर फाइंडिंग कि कोई बहुत ज्यादा खुश भी है, तब भी मतलब एक सिंपल सी बात है, रिमार्केबल चेंजेस इन योर जेन्युइन बिहेवियर, योर जेन्युइन डेली बिहेवियर। जेन्युइन डेली बिहेवियर हो सकता है आप बहुत जॉली हो सकता है आप बहुत ज्यादा जोक्स क्रिएट करते हो। अब आपका मार्केट बिहेवियर क्या हो सकता है, चेंजेस क्या होंगे, थोड़ा सा डिग्री कम हो गई है, या फिर आप चुप रहते हो, आप बैलेंस बिहेवियर हो, बट आपने बहुत ज्यादा बोलना शुरू कर दिया। ये मार्केट बिहेवियर अगर आपको लग भी रहे हैं ना, बीइंग अ फ्रेंड, बीइंग अ फैमिली मेंबर, जस्ट गो एंड आस्क व्हाट हैपेंड। अगर लगता है कि वो बोलने में कंफर्टेबल नहीं है, जस्ट गिव देम अ हग। वो कंफर्ट, वो स्पेस अगर आप देंगे, वो एक्सेप्टेंस अगर आप देंगे, बीइंग पेरेंट्स, बीइंग फ्रेंड, तो वो टैबू धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। टैबू इसीलिए ही है बिकॉज जैसे हिस्ट्री में होता था कि अगर अभी भी ये चीज होती है, देयर इज अगर हिस्ट्री है किसी को मेंटल इलनेस की, वहां पे आगे शादियां नहीं हो रही हैं, या शादी के बाद में पता चल रहा है कि इसकी ये हिस्ट्री रही है, तो पीपल यूजुअली अवॉइड। व्हाट इफ अगर आपके पार्टनर को शादी के बाद में डिप्रेशन हो जाए, शादी के बाद में स्किज़ोफ्रेनिया हो जाए, एंड देयर आर सम केसेस इनटू आगरा मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट, और मे बी जितने भी गवर्नमेंट मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट्स हैं, वहां पे ऐसे इतने केसेस हैं जो अनक्लेम्ड हैं, उनकी फैमिलीज उनको छोड़ के चली गई हैं, आगे कभी पूछने भी नहीं आएंगी वो कैसे हैं कैसे नहीं है, क्योंकि वो टैबू है, वो एक्सेप्टेंस नहीं है। उनके लिए ऐसा लगता है कि अगर मेंटल हेल्थ इशू है, वो अब हमेशा चलता रहेगा। उसके लिए एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी क्योंकि अवेयरनेस नहीं है। आप जैसे आपको नहीं पता दवाइयों को लेके है कि एक बार आपने साइकोट्रोपिक ड्रग्स अगर स्टार्ट किए, यू नीड टू टेक इट फॉर द लाइफ टाइम, ऐसा नहीं है। आपको दवाइयों के साथ में साइकोथेरेपी की ज्यादा जरूरत है। बीमारी यहाँ पे है, Mhm. बीमारी बॉडी में नहीं Mhm. है। when you are dealing with the mental health, you need to change your perspective from where it is starting। कहाँ पे इशू आया, कहाँ पे फिक्सेशन आया, यू नीड टू वर्क ऑन इट। अगर मैंने उस पर काम कर लिया तो मेरी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, मुझे दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम दवाइयाँ लेके उस प्रॉब्लम को, हमारा जो फिजिकल रिएक्शन आ रहा है ना उस प्रॉब्लम से रिलेटेड, दवाइयाँ सिर्फ उसको कंट्रोल कर रही हैं, या उसकी सीवियरिटी जो आ रही है, उसका जो एग्रेसिव लेवल निकल के आ रहा है, सिर्फ उसको हार्मोनल वाइज, केमिकल वाइज कंट्रोल कर रही हैं। बट आपका जो थॉट बन चुका है, जो आपका परसेप्शन बैठ चुका है, आप उसको चेंज नहीं कर रहे हो। इफ आई एम थिंकिंग नेगेटिव, वो कोई भी दवाई मेरी नेगेटिविटी को नहीं निकाल सकती जब तक मैं उस पे काम नहीं करूंगी। सो व्हेन वी आर एजुकेटेड कि यस मेंटल हेल्थ एग्जिस्ट, मेंटल हेल्थ इश्यूज एग्जिस्ट, एंड ट्रीटमेंट प्लान इज थेरेपी एंड मेडिसिन, वेरी क्लियरली, वो एक्सेप्टेंस, वो अवेयरनेस अगर हम लेके आएंगे तो वो टैबू डेफिनेटली खत्म हो जाएगा। एंड आई थिंक इट्स अ हाई टाइम कि वी नीड टू इंक्लूड दिट्स मेंटल हेल्थ इनटू इन एवरी सिलेबस। जैसे आप लोग टेक्नोलॉजी से हो, राइट, सिर्फ वो एक और चीज है, Yeah. सिर्फ ह्यूमैनिटीज में साइकोलॉजी पढ़ा जा रहा है। पीपल आर Yeah. नॉट अवेयर अबाउट इट। Mhm. व्हाई? आई Yeah. थिंक इंजीनियरिंग स्टूडेंट ज्यादा स्ट्रेस में है।
मेडिकल स्टूडेंट ज्यादा स्ट्रेस में है। तो Definitely. वो सभी के, साइकोलॉजी इज अ सब्जेक्ट ऑफ द बिहेवियरल साइंस, वी ऑल नीड टू Mhm. नो अबाउट इट, वी ऑल नीड टू एक्सेप्ट इट in the welcoming way to break the step. Okay. Okay, so can we briefly talk about the chronic stress, because most of the people they just know that okay, fine, it's stress and I'm stressed right now Mm-hmm. and it'll get cured and I'll deal with it and all. But can you just briefly tell about chronic stress and how it overall affects our health? And this will be the concluding question. So chronic stress is not a, not any clinical term, because stress level जब high होते हैं, we have levels, mild, moderate, severe. So severe stress की जब स्टेज आ जाएगी, उसके बाद में आप एंजाइटी में कन्वर्ट हो जाते हो धीरे धीरे। स्ट्रेस जो आपकी डे टू डे लाइफ में कंटिन्यू चलता जा रहा है, क्रॉनिक वो है जब हम बोलते हैं ना द सेम वे कि ठीक हो जाएगा एक टाइम पे, तो ठीक है मैं डील कर लूंगा, कोई बात नहीं, सभी को होता है, क्या फर्क पड़ता है। बट क्रॉनिक अगर आपकी लैंग्वेज में बोले या मेरी लैंग्वेज में बोले, सीवियर स्ट्रेस, जब आपका सब कुछ ट्राई करने के बाद में भी यू आर स्टिल कंटिन्यूइंग, यू आर वर्किंग, यू आर एक्टिव, यू आर डूइंग एवरीथिंग, बट वो पीछे एक होता है ना कि एक बर्डन आपको फील हो रहा है, कुछ है जो मुझे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, वो आपकी क्रॉनिक स्टेट की एक्चुअली स्टेज है। वहां पे आपके लिए एक वार्निंग, रेड फ्लैग आ रहा है कि यू नीड टू वर्क ऑन इट। अगर वो आपने करना शुरू कर दिया तो हम नेक्स्ट लेवल्स तक पहुंचेंगे ही नहीं। तो क्रॉनिक स्ट्रेस या सीवियर स्ट्रेस इज समथिंग जो बहुत टाइम तक कंटिन्यू हो रही है, एक ही सिचुएशन, चाहे आप कितना भी डिस्ट्रैक्शन भी यूज कर रहे हैं, जैसे हमने इतनी टेक्निक्स में बताया कि डिस्ट्रैक्शन वर्क, जब वो डिस्ट्रैक्शन भी फेल होने लग जाता है, देन यू नीड मेडिकल हेल्प। Okay. Well, I guess that was all. And with that, it's a wrap. Thank you so much, Dr. Shweta, for giving us your time and enlightening our audience. Thank you, all our attendees, for joining us today. I'm sure this webinar was really productive and beneficial. And we got to your questions as much as possible. And definitely, thank you so much for joining us. And we'll be back with another episode of webinar. Till then, stay tuned and stay safe, stay at home. IEEE are the NorCap University. Thank you for joining us. Do subscribe to our LinkedIn page and also to our YouTube channel. Press the bell icon and all below. Please do send us your feedbacks. We would love to hear them. And this is me, Anshika, signing off for the day. Thank you, everyone, for joining us today. And I hope you all found this session productive. And this is all about stress, and this is all you need to know about stress. And I hope that everything you heard in this session, you will try to implement and come up with best results. So thank you, everyone. You may disconnect now. And bye bye, Thank you Tata. Take everyone, care. take care. Thank you, ma'am.